Well, students, in the previous lesson, we looked at A1 and A2 in the comprehension section for this first chapter, and we discussed the questions. Hope you didn't have much problem answering them. And anyways, you will receive feedback on your responses as well. Anyways, in today's session, we are going to complete the discuss part of this chapter where, these are, like relatively long answer questions. So we are going to discuss these questions and subsequently we will move to the vocabulary section as well, if, we have enough time. So the first question is, name some of the animals that have become extinct and forests which are dwindling. Why do you think this is happening? Okay, so you can, like do a little bit of internet research as well. यहाँ पर वो पता चल जाएगा कुछ एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं और फॉरेस्ट जो कि गायब होने की कगार पर है. सम नेम्स इन दिस कुड बी लाइक डोडो, पैसेंजर पिजन, टस्मेनियन टाइगर, woolly mammoth, Zanzibar leopard, etc. Okay, animals are getting extinct because of like indiscriminate poaching or killing, change in climate in a particular region, or simply because like plants or animals on which the species depend for food have died, or in some cases these animals also become extinct because of the loss of habitats. Some animals become extinct because more powerful predators finish their entire species. Now, 82 countries out of 148 countries lying within the original forest zone have lost all their intact forest landscapes. Some dwindling forest areas are like Atlantic Forest, Gran Chaco, Borneo, Cerrado in Brazil, Congo Basin, and Eastern Africa. Forest areas are dwindling due to like conversion of forest land into farmlands and pastures, cattle ranching, mining activity, illegal cutting of trees, and road constructions. So well, if you mention all these points, you can have a proper like discussion based answer to this question. The next question is, do you feel that preventive actions can be taken to stop the degradation of our environment? क्या आपको लगता है कि preventive actions जो हैं वो लिए जा सकते हैं अपने environment के degradation को रोकने के लिए? Well, yes, of course, preventive actions can be taken to stop this degradation. Natural resources must be used, managed, and conserved properly, right? Technological advancements should be directed towards conservation of these resources and not with damages to our and not towards damaging the our natural environment. Okay, we should keep pollution, whether of land, water, air, or noise, under control. We should also try to control our population. The natural habitat of animals should not be destroyed. So these are some preventive actions. You can also search other preventive actions by a quick Google search. That will be quite helpful. So well, that's it for this discussion section. Now let us quickly look at the vocabulary part, because I think we have something like very interesting to learn here. अब देखो यहाँ पर जो हम लोग साइन पोस्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. साइन पोस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्बल स्टेटमेंट्स होते हैं स्पीच के दरमियान यूज होने वाले, जिनका काम होता है कि ऑडियंस को एंगेज करना और उनको जो है स्पीच के डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू गाइड करना. तो लिंकिंग और साइन पोस्टिंग एक्सप्रेशंस ये जो है हमें अपने आइडियाज को लॉजिकली कनेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में जो है हेल्प करते हैं. ओके, साइन पोस्ट जो है उनका काम हो गया कि स्पीच के जो हाईलाइटिंग पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करना. जैसे कि टू बिगिन विद, या मे आई फोकस योर अटेंशन टू दिस फिगर और दिस डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंटली. इसके अलावा जो है साइन पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रास्ट को भी हाईलाइट करने में काम आ सकते हैं. जैसे कि हाउएवर, लाइक द वर्ल्ड हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेसेस, हाउएवर where all the world has also been destroyed in the same process.
तो यहाँ पर however क्या करता है, एक contrasting experiment provide करता है, right? We have been talking about environmental sustainability and creating awareness. Despite this, there is no concrete action, or there has been no concrete actions. So like, however, despite this, on the other hand, all these are, like signposts used for creating contrast. Besides this, they also help with, adding an extra point. For example, like in addition to creating awareness about environmental degradation, we should also make laws to minimize environment degrading practices. तो यहाँ पर जो है in addition का यूज हुआ, या फिर the government has been spending on creating wider awareness. In addition to this, some private non-profit organizations are also running campaigns. Similarly, when you are adding extra point, you can use furthermore. For example, like people are becoming more conscious about environment. Furthermore, the governments are also making laws and are also making laws to prevent environmental degradation. तो इस तरीके से जो है in addition to, furthermore, इन सब का यूज जो है एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा जो है ये टाइम और सीक्वेंस को भी फिक्स करने में यूज होते हैं. फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो मतलब क्या, पहला पॉइंट आप बोल रहे हैं, या फिर सो लेट मी स्टार्ट बाय, मतलब बिल्कुल पहला पॉइंट आप बोल रहे हैं. सो फाइनली, जब आप लास्ट पॉइंट बना रहे हैं या कंक्लूड कर रहे हैं, वहां पर आप सो फाइनली का यूज कर सकते हैं. या फिर जब आप लास्ट पॉइंट बता रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं दैट ब्रिंग्स अस टू माय लास्ट पॉइंट. ओके, तो इस तरीके से जो है टाइम और सीक्वेंस जो है आपके पॉइंट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का, उसको बताने के लिए जो है आप यूज करते हैं साइन पोस्ट्स का. These are like links. They help emphasize a point. For example, in fact, not only but also. ये सब जो है emphasis डालने में काम आते हैं. The examples of signpost in speech are other examples. तो बाकी examples क्या हैं signpost के, जैसे कि today I am going to talk about, well, moving on to, यानी कि अगले पॉइंट की तरफ जाने के लिए जो है let's take a moment to, ये जो है नॉर्मली एक छोटा सा ब्रेक देने के लिए यूज होता है स्पीच में, कि अभी तक जो कहा गया है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, या सोचिए. एज यू मे नो, मतलब आप आगे आप बताइएगा ना कि क्या जान सकते हैं वो, तो जब आप बताइएगा वो चीज, लेकिन जब आप शुरू करिएगा एज यू मे नो, ऑडियंस अचानक से जो है ध्यान देने लगेगी कि अच्छा मुझे क्या ऐसा पता है जो साहब ये बताने वाले हैं. तो इस तरीके से जो है देयर आर लाइक different uses or instances of signposts used in speeches. So you have to reread this whole speech and prepare a list of all the signpost expressions that the speaker uses in the speech. Okay, I know this is going to be a very slightly difficult activity, but it will also make you familiar with the techniques or some of the techniques used in making speeches. The second activity is making a presentation on pollution and recycling. This is a part of your speaking activity. You can give it a try on your own. Okay, bye bye.